Okay, let me present my screen. Today we will be doing the numericals on calculation of GDP, private income, private saving and private disposable income. I hope the question is visible, class, clearly. Yes, class? Okay. So the question says, from the following calculate GDP, private saving and private disposable income. All the figures are in rupees crores. Consumption is given to be rupees 5500. Employee compensation is 5300. Rental income is 700. Proprietor's income is 800. Let's make proprietor rental income है ना, proprietor income को 900 कर लेते हैं. Proprietor income is 900. Corporate profits are given to be 700. Net interest is rupees 400. Net indirect business tax is 500. Consumption of fixed capital 1000. Transfers received from government is equal to rupees 350. Interest payment on government debt is rupees 200. And direct taxes are given to be rupees 700. So these are the figures given to you, and you have to calculate three things. First, you have to calculate the GDP. Next, we will be calculating the private disposable income and then the private saving. Let's begin. So solution. Let's calculate GDP first. What formula will be using here for GDP, considering the information given to us? What all we will be adding? We will add compensation, employee compensation, plus rental income. We have already done these formulas. Today we are practicing numericals. Proprietor's income, proprietor's income. This question is exactly similar to the one given to you in your assignment, but the figures are different. Corporate profit, and plus your net interest, plus indirect business tax. I'm writing indirect business tax. And the last thing to be added to this is your consumption of fixed capital. Fixed capital consumption लिख लेते हैं इसको. Fixed capital consumption. Okay, Ji. This is the formula. Now put the values for all these and calculate the GDP. Put the values for these and calculate the GDP. GDP is equal to, okay, how much is employee compensation? Ma'am, it's 9,500. Answer is no. Khushi, kindly check. Answer is not 9,500. This should be 10,400. एक बार देखते हैं. Employee compensation कितना है हमारा? 5,300 plus rental income is 700 plus proprietary income is 900 plus corporate profit is given to be 700 plus net interest is 400 plus indirect business tax 500 plus consumption of fixed capital 1000
which 900 से पहले था 700 900 के बाद है आपका कंजम्पशन ये था 1000 employee compensation we have taken, rental income we have already taken, proprietary income 400, corporate profit 500, net interest कितना दे रखा है, एक सेकेंड, net interest is 400 again, and then 500 is indirect business tax, consumption of fixed capital 1000. That's it. Have we taken all? Yes, ma'am. 5300 plus yes now हाँ ठीक है खुशी, आंसर इज करेक्ट. कितना है इसका टोटल करके? 9,500. yes it is correct. wait a second, ये मुझे एक मिनट करेक्ट करने दो. this is 700. 9,000 500. yes your answer is correct. 9,500. तो ये तो हो गया जीडीपी. which method of calculation of GDP is used here? कितने मेथड्स होते हैं जीडीपी कैलकुलेट करने के? यहाँ पे कौन सा मेथड यूज हुआ है? 3. अब यहाँ पे income method. Income method, yes. This formula is for the calculation of national income or GDP through income method. Now the next thing which we have to calculate is our private disposable income. Private disposable income. Private disposable income का formula क्या होता है? It is Y plus TR. Y stands for your, what does Y stand for, class? What does Y stands for? Income. Come on. Income. Yes, it stands for income. In our question, is the figure of income given? No, it is not given, but we have calculated it in previous step. I just now said that GDP and is same as national income. National income through income method formula we have used here. तो 9500 जो आया वो आपकी जीडीपी भी है, वो नेशनल इनकम भी है. तो y की फिगर में आप 9500 डालेंगे. TR is given to you. What does TR stands for? Transfer payments. Transfer payments, very good. And what does INT stands for? TR stands for transfer payment, which is 350. INT stands for interest payment on government debt, which stands 200. And T stands for direct taxes. Now put the value here and tell me the answer. This is 9500 plus, how much is TR? TR is 350 plus interest payment on government debts is 200 and minus taxes. Taxes are given to be 700. क्या value आई class? What is the answer? 10,750. Everybody getting the same answer? Let's bring them here. Anji. So 9500 plus 350 plus 200 minus 700. This is 10,000. Which was the figure? 750. Yes, it is correct. 10,750. Very good. The third thing which we have to calculate now is private saving. Private saving. What is the formula for calculating private saving? Private is, has it got anything to do with private disposable income? Yes. What is the formula for private saving? Check your notes and tell me. Private saving is private disposable income minus Private consumption. private consumption. Very good. Private disposable income we have just now calculated, which is 10750 is equal to 10750. And what is the value given for private consumption here?
Is it given? Private consumption? 5,500. Yes, it is given. See, it's given here. It's given by the name of consumption. So consumption or private consumption, there is no difference. It is one and the same thing. So 5,500 we will deduct from 10750, and the answer is 5,250. 5,250. This is your private saving. Everybody getting the same answer? Yes, ma'am. Okay, very good. So similar question was given to you in assignment, in which I think few of you were facing difficulty. Now we can discuss that question. What answer you are getting for GDP of that question? Jayant is there in the class today? No, ma'am. Okay, Jayant was having some difficulty. अच्छा, उसका क्या आंसर आया था असाइनमेंट वाला? Okay. Okay, so is this clear? चलिए फिर एक और क्वेश्चन करते हैं. Let's do another question, and now we will be calculating the GDP. We will be converting the nominal GDP into real GDP. Now, before going into the numerical, can anybody tell me what is the difference between nominal GDP and what is real GDP? What is nominal GDP, class? We have already discussed this. What is nominal GDP? Who will answer? Nominal GDP and real GDP. मैम, जहाँ रियल जीडीपी जो होती है वो बेस ईयर पे कैलकुलेट होती है. Yes. वो नॉमिनल जीडीपी होती है वो करंट ईयर की प्राइस पे कैलकुलेट होती है. Exactly. Very good. Real GDP is calculated, or it is a value of current output at some base year price. मतलब आउटपुट करंट डेट का है, बट उसकी वैल्यू एट बेस ईयर प्राइसेस पे जब हम कन्वर्ट कर देते हैं तो दैट इज नोन एज रियल जीडीपी. वेयर एज if we are taking the value of current output at current year price, then it is known as nominal GDP. नॉमिनल जीडीपी. ठीक है. And what is base year? Base year basically is that year that is taken to be constant. उसको हम stable year मानते हैं. So usually the year in which nothing extraordinary happens, the year in which everything remains same and normal, उसको usually हम base year लेते हैं. Now, can 2020 be considered as a base year? Can No, we? ma'am. No, ma'am. Why no? There were many economic fluctuations. Because of COVID-19. Because of COVID-19, because of pandemic, the 2020 year cannot be assumed to be base year for any future calculations of indexes, because there were lots of fluctuations, lot of economic upheaval was there. So हम 2020 को कभी भी बेस ईयर नहीं ले सकते हैं. सो बेस ईयर हमेशा वो ईयर लिया जाता है जिसमें कंडीशंस नॉर्मल रहती हैं, नेचुरल कैलामिटी नहीं हुई है, कोई पैंडेमिक नहीं हुआ है, इकोनॉमिक सिचुएशन मोर और लेस सेम रही है, उस ईयर को हम बेस ईयर लेते हैं. सो नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का डिफरेंस आपको क्लियर हो गया. नाउ let's do a numerical where we will be converting the nominal GDP into real GDP. ठीक है. So the question says convert nominal GDP into real GDP. ठीक है. And the information given to you is current year prices is GDP at current year price is rupees 1,50,000.
1,50,000 and price index is rupees 150 is equal to rupees 150. ठीक है, तो मैं दो केसेस दे रही हूँ. एक वी विल बी डूइंग टू न्यूमेरिकल सेम. ये ए पार्ट है, इसका हम सॉल्यूशन करेंगे एंड देन आई एम गिविंग यू बी पार्ट आल्सो साइड बाय साइड simultaneously, not side by side. GDP at constant price, current year price is rupees 3 lakhs is equal to rupees 1 2 3 4 5 3 lakh and price index is 300. Let's start the calculation. हाँ जी, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस आपको करनी है. कैसे करेंगे बताइए? व्हाट फॉर्मूला वी विल बी यूजिंग हियर? What formula will use? Come on class. GDP. देखो क्वेश्चन कह रहा है कन्वर्ट नॉमिनल जीडीपी इनटू रियल जीडीपी. नॉमिनल जीडीपी हमेशा करंट प्राइसेस पे होती है, रियल जीडीपी आपकी बेस ईयर प्राइसेस पे होती है. अभी अभी हमने डिस्कशन करा इसका डेफिनेशन. तो रियल जीडीपी को हम जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस भी बोलते हैं. जीडीपी एट constant price. Answer is 1 lakh. Yes, answer is 1 lakh. How you have got it? Tell me the formula. इसका formula GDP है. at हाँ, GDP बोलो. GDP करंट प्राइस जो अकाउंट में डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स. Divided by price index. Very good. Into बेस ईयर. into base year. ठीक है, यही फॉर्मूला हम लगाते हैं यहाँ पे. GDP at current price is given to be 1,50,000 divided by price index 150 and base year here assuming here to be 100. Star sign represents multiplication. 100. So this comes out to be 1,50,000 divided by 150 into 100. What is the answer? 1 lakh. 1 lakh. 1 lakh. Very good. Very easy. Here. Okay, let's do the next one now. Same formula we will be using, but figures will be different. Same formula, let's use the same page. GDP at constant price is equal to GDP divided by price index into base year. In the values, we get 3 lakh. किससे डिवाइड करेंगे 3 लाख को? 3 लाख डिवाइडेड बाय 300. yes and multiplied by 100. very easy. And answer is 1 lakh. again 1 lakh. same, ये हमने पहले भी किया हुआ है. अच्छा, now my question is what if we are required to convert real GDP to nominal? अभी तो हमने nominal को real में किया है. What if we have to convert real GDP into nominal? तब what formula you will be using? ये जो वैल्यू आई है, what is this value? This is the value of real GDP. This is the value of Real GDP. अगर रियल जीडीपी दे रखी है और नॉमिनल में कन्वर्ट करना है, तब आप कैसे करेंगे? व्हाट फॉर्मूला यू विल पुट? Nominal GDP is real GDP into price index. यस,
real GDP multiplied by your price index divided by your the GDP at the current prices. No, divided by your base year. ऑपोजिट हो जाएगा फॉर्मूला. जो यहाँ डिवाइड हो रहा है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो डिवाइड हो जाएगा. क्लियर? जैसे हम इसको करके देखते हैं. चलो यहीं पे कर लेते हैं इसको. हमें रियल जीडीपी 1 लाख रुपीस दे रखी है. अगर हमें इसको नॉमिनल में कन्वर्ट करना है तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्राइस इंडेक्स से. प्राइस इंडेक्स मैं ये वाला केस ले रही हूँ, दिस वन आई एम टेकिंग. प्राइस इंडेक्स 300 है. 300 से हम मल्टीप्लाई करेंगे और बेस ईयर से हम पूरे को डिवाइड करेंगे. बेस ईयर वाज 100. टेल मी द आंसर. व्हाट आंसर यू आर गेटिंग? 3 lakh. 3 lakh. Is 3 lakh same as this 3 lakh? Because it is nominal GDP. Got it, class? Yes, ma'am. Very good. मैम. Okay. What is the formula for GDP deflator then? GDP deflator. Nominal by real GDP into 100. Yes. And what does GDP deflator stands for? GDP deflator. Formula, you have given the correct formula. GDP deflator is equal to, let's write it. This is a nominal GDP. इससे डिवाइड होगा divided by Real GDP. yes real GDP into 100. Clear? And what does GDP deflator stand for? Any idea, class? We have done it before. All what is GDP Measure deflator? of inflation. It is in a way measure of inflation, but what is the, if you have to explain it in numeric terms, and what exactly is GDP? अगर आपको prices और की टर्म में एक्सप्लेन करना है किसी को लेमैन लैंग्वेज में, तो जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? जीडीपी डिफ्लेटर होता है एवरेज लेवल ऑफ प्राइसेस ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच आर इंक्लूडेड इन द जीडीपी. जीडीपी के अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड होती हैं उन सब का एवरेज प्राइस इज नोन एज जीडीपी डिफ्लेटर. So all those goods and services which are produced domestically means जो imported goods नहीं है, सिर्फ हम उन goods को लेते हैं. GDP deflator में what goods do we take? Only those goods and services which are domestically produced. And if we take the price of those goods and services और उसका हम average out निकाल लेते हैं, then this is known as GDP deflator. Clear? And इसकी रेशियो होती है that is nominal GDP upon real GDP into 100. So we can say कि जो real GDP को जिस अमाउंट से हम डिफ्लेट करते हैं that is known as nominal GDP. I am repeating again, ध्यान से सुनिए. Real GDP is the amount by which nominal GDP is deflated. What is the meaning of deflation? Deflation means बढ़ाना या कम करना? कम करना. ओके, चलिए अब एक बार जरा पीछे वाले एग्जांपल पे दोबारा से आइए. इस क्वेश्चन में व्हाट वाज रियल जीडीपी? इन दिस क्वेश्चन बी पार्ट में व्हाट वाज रियल जीडीपी? 1 lakh. 1 lakh. 1 लाख. एंड व्हाट वाज नॉमिनल जीडीपी जो हमने कैलकुलेट करी अभी यहाँ पर? 3 lakh. 3 lakh. Which is higher? Real GDP is higher or nominal GDP is higher? Nominal. Nominal is higher. I am saying that, ध्यान से सुनिएगा, real GDP is the amount by which nominal GDP must be deflated. Nominal GDP हमारी 3 लाख आई है, real GDP हमारी 1 लाख है. तो 3 लाख को कितने अमाउंट से हम डिफ्लेट करें कि वो रियल जीडीपी के बराबर हो जाए? हमें कम करना पड़ेगा ना.
रियल जीडीपी वो अमाउंट है जिससे हम नॉमिनल जीडीपी को डिफ्लेट करते हैं, नॉमिनल जीडीपी के लेवल को कम करते हैं। नॉमिनल जीडीपी के लेवल को कम क्यों करना है? नॉमिनल जीडीपी के लेवल को इसलिए कम करना है क्योंकि वो करंट ईयर के प्राइसेस पे है, बट हमें तो रियल प्राइसेस देखने हैं। रियल प्राइसेस के लिए हमें बेस ईयर का प्राइस लेना है। तो जो करंट की सिचुएशन है, जैसे अभी करंट में दिखा रहे हैं जी एम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गई, लेकिन अगर हम उसको डिफ्लेट करते हैं, रियल टर्म्स में देखते हैं, तो एम्प्लॉयमेंट बहुत ही बढ़ी है, एम्प्लॉयमेंट मार्जिनली बढ़ी है, थोड़ी सी बढ़ी है। तो इसको जब डिफ्लेशन हम करते हैं तब हम करेक्ट वैल्यू पे अराइव होते हैं, और डिफ्लेशन करने के लिए वी यूज दिस फॉर्मूला। तो अगर मैं यही वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगाऊं, हमारे क्वेश्चन में एग्जाम्पल जो हम लिया हमने लास्ट वाला, इन दैट एग्जाम्पल नॉमिनल जीडीपी वाज 3 लाख रुपीज divided by real GDP was 1 lakh rupees into 100, कितना आ गया आंसर? 300. 300. So 300 is the amount by which nominal GDP must be deflated to bring it to the level of real GDP. Is it clear, class? Yes, ma'am. अब जीडीपी डिफ्लेटर जो है ना, इसके अंदर टू थिंग्स आर नॉट इंक्लूडेड, मींस देयर आर टू थिंग्स व्हिच जीडीपी डिफ्लेटर डज नॉट टेक इनटू अकाउंट। एक तो अभी हमने बोली थी कि जीडीपी डिफ्लेटर में हम क्या लेते हैं, ओनली दी गुड्स व्हिच आर कहाँ प्रोड्यूस हुई हैं, Domestically. Domestically. तो फर्स्ट थिंग which is not included in GDP deflator is the goods which are produced abroad. So all the imported goods, value of all the imported goods is not a part of GDP deflator. Second thing जो हम GDP deflator में ignore करते हैं या फिर include नहीं करते हैं, that is it does not show the change in consumer welfare resulting from changing basket. What is the meaning of changing basket? I'm repeating again. GDP deflator does not show the change in consumer welfare resulting from changing basket. What does changing basket stand for? या इससे पहले बताओ what does basket stand for? Set of goods. It is a set of good. Very good. Which set of good? It is a set of fixed. It is a fixed set. एक तो fixed word use होगा. It is a fixed set of goods and services produced in a particular during a particular year. जैसे हमने ईयर में देखा जी, फूडिंग ये क्लोथिंग इतने की, फ्यूल इतने का, हाउसिंग इतने का, एजुकेशन इतने की, उसका एक एक अमाउंट फिक्स कर दिया। अगर ये सेम बास्केट है, देखो बास्केट जरूरी नहीं है सेम रहे, आप जब भी शॉपिंग करने जाते हो, डू यू पिक अप द सेम थिंग्स और यू कीप चेंजिंग, मतलब कीप एडिंग एंड डिलीटिंग द थिंग्स फ्रॉम योर लिस्ट ऑफ आइटम्स? टेल मी। Adding and deleting. एडिंग एंड डिलीटिंग। जीडीपी डिफ्लेटर कहता है कि हम जब जीडीपी डिफ्लेशन की कैलकुलेशन कर रहे हैं, सो वी विल नॉट कंसिडर द चेंज इन द लिस्ट ऑफ गुड्स ब्रॉट। हम एज्यूम करेंगे कि वही गुड्स खरीदी गई हैं जो लास्ट साइकिल में खरीदी गई थी या जो बेस ईयर में खरीदी गई थी, बट इन रियलिटी ऐसा नहीं होता है। ओके, एग्रीड रियलिटी में ऐसा नहीं होता, देन व्हाई डू वी इग्नोर देम? Why do not we take the change in list into account? The reason is because when you have to see the impact of one thing on the other, you are required to keep the other things constant. I think since the beginning, whenever we have discussed about various laws in economics, like law of demand also, we have been assuming certain things to be constant. Yes, ma'am. What is that word? What is that phrase which represents other things being equal? एक वर्ड फ्रेज यूज होता है ना इसके लिए, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल या अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। इसके लिए हम टू वर्ड्स यूज करते हैं जिसको हम फ्रेज बोलते हैं। लॉ ऑफ डिमांड में सबसे प्राइमरीली वो यूज हुआ था या होता है यूज, सिट्रस पेरिबस, रिमेंबर? Yes, ma'am. Yes, ma'am.
ceteris paribus says other things remaining same. तो same is the case here. अगर हमें किसी चीज का इम्पैक्ट देखना है तो हमें रेस्ट ऑफ द थिंग्स को एज्यूम करना पड़ता है टू बी कांस्टेंट, बिकॉज इफ ऑल द थिंग्स आर वेरिंग, हाउ कैन वी सी द इम्पैक्ट? we can see the clear impact. It becomes difficult now. Like I'll give you an example. For example, you have to see that what is the impact of age on the height of a person. कि is height increasing with the age? अगर आपको इसका impact देखना है, so you are required to keep the other factors constant. अब मुझे बताइए कौन से other factors हैं जिनकी वजह से height बढ़ती है? नेम फ्यू फैक्टर्स जिनकी वजह से भी हाइट बढ़ती है. सबसे पहला इंपॉर्टेंट, नंबर 1 एक्सरसाइज, नंबर 2 जीन्स, ओके, नंबर 3 Food. genes means genes here means genetics. Number 3 food, very important, food and nutrition. So if you are eating good food, muscle building food, growth food, if you are having if your genes are like that, your hereditary, your parents, grandparents were tall. And third factor was what was the third factor? First हमने क्या बोला था इसमें? Exercise. And if you are regularly doing exercise, so all these 3 factors tend to contribute to the increase in your height. And at the same time age is also there. But अगर हमें age का impact height पे देखना है तो हमें other 3 factors, that is exercise, your genetics and your food, nutrition which you are consuming, इसको हमें constant मानना पड़ेगा. हमें मान के चलना पड़ेगा कि जेनेटिक्स का कोई रोल प्ले नहीं कर रहा, खाना उतना ही खा रहे हैं जितना 5 years की एज पे खाते थे, 6 years में भी वही खा रहे हैं, 7 में भी वही खा रहे हैं, 8 में भी वही खा रहे हैं. मीन्स विद एज यू आर नॉट इंक्रीजिंग योर मील इनटेक, फूड इनटेक और न्यूट्रिशन इनटेक सेम है. प्लस हमें अज्यूम करना पड़ेगा दैट यू आर नॉट एक्सरसाइजिंग, और इन केस यू आर एक्सरसाइजिंग तो एक्सरसाइज का अमाउंट सेम है जितना आपका पहले था. तो बाकी तीनों फैक्टर्स को कांस्टेंट रख के जब हम एज का इम्पैक्ट ऑन हाइट देखेंगे तब हमें पता चलेगा जी एज कितना कंट्रीब्यूट करती है हाइट में. तो सेम चीज हम यहाँ कर रहे हैं. अगर हमें जीडीपी डिफ्लेटर करेक्ट कैलकुलेट करना है तो हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि उतनी ही गुड्स हैं जो जिनका प्राइस हमें एवरेज प्राइस आउट निकालना है. बाकी गुड्स को ना तो लिस्ट में कोई न्यू गुड ऐड हुई है, ना कोई लिस्ट से गुड एक्सक्लूड हुई है. Is this concept clear कि why we keep other things constant? Class? Yes, ma'am. इसको बोलते हैं controlled experiment. क्योंकि कोई भी चीज आइसोलेशन में ऑपरेट नहीं करती है. Everything is impacted by many other factors. If we really want to see the relation between 2 factors or 2 variables, we have to keep the other factors constant. Otherwise हमारे को clear picture नहीं पता चलेगी. So यही रीजन था कि हम एज्यूम करते हैं कि कांस्टेंट बास्केट है, बास्केट में कोई चेंज नहीं आया है. सो दिस वाज ऑल अबाउट योर जीडीपी डिफ्लेटर, जिसका हमने फॉर्मूला देखा एंड वी हैव कैलकुलेटेड आल्सो. Okay, now one last question. What do you mean by price index? We are using this word. We have used price index of 100 here. We have used price index in the previous this thing also. इससे पहले भी हमने किया था ना, अभी क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में. यहाँ भी हमने प्राइस इंडेक्स वर्ड यूज किया. What is the meaning of price index, class? Average price of all the goods. All the goods or some specific good? Goods which are in basket. Yes, specific goods which are in basket, not all the goods. All the goods of a specific basket, you can say. So average, price index is the average level of prices of the specific set of goods. Goods जब हम बोलते हैं तो goods and services दोनों include होता है. I'm repeating again. Price index is a measure of average level of price of a specific set of goods and services relative to the price in a specific year. Specific year यहाँ पे आपका base year होगा. एक base year में
एक स्पेसिफिक सेट ऑफ गुड के एवरेज प्राइसेस जो थे उसको हम दैट इज नोन एज प्राइस इंडेक्स. क्लियर क्लास? Yes, ma'am. ठीक है. So this was all about your nominal GDP, real GDP, GDP deflator, how it is calculated, and we have also done a numerical on the calculation of GDP through income method. So rest of the numericals we'll revise in the next class. I will upload this on the classroom also. And please now you do the assignment question once again, those who were not clear with it. मैम आप मंडे को मार्क्स बता देना.